Good evening, beta. Today we are going to start chemical bonding, class +1, unit 4. This is the most important chapter of chemistry +1. Atoms of elements combine together to form molecules. जब molecules इकट्ठे हो जाएं, they lead to a larger structure which is called compound. Now, first question is, why do atoms combine? Atoms combine क्यों करते हैं? Why H is combining with Cl to form HCl? Why formation of water? Only this one. Why there does not exist this H4, H2O3? एक proper combination बनता है atoms का. Definite proportion according to first chapter. Now question is, why do atoms combine in a definite ratio? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से उनकी रेशियो फिक्स हो जाती है, उससे ज्यादा या उससे कम कॉम्बिनेशन नहीं हो. Now the whole concept is of stability. The atoms in the universe combine with each other to attain stability. Stability means low energy, low reactivity. In simple language we can say attack नहीं होगा atoms पे. Atoms चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाएं, combine होके ऐसे structure बना लें कि हम stable हो जाएं और हम protected हो जाएं, no attack of other elements from outside. So atoms combine with each other to attain stability, and chemistry का एक rule है octet rule. This rule states that an atom attains stability when it has 8 electrons in its valence shell. सबसे बाहर वाले shell को बोलेंगे जी valence shell, which is also called outermost shell. So atoms combine with each other to become stable. Now there are total 118 elements. 118 elements है बेटा, which combine with each other in different ways. But out of these elements, there is one family which is noble gas family. Helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These all elements lie in group form, and this family is called noble gas family. बाकी सब इनकी कॉपी करते हैं. These are already fully filled. They already have 8 electrons. These are already stable. In other words, we can say inert. बाकी elements combine करेंगे, एक force उनको जोड़ के रखेगी. That force which combine atoms is called bond, chemical. और bonding के बाद वो ऐसा बनने की कोशिश करेंगे, like no. So this is the main concept of attaining stability. In other words, we can say मोक्ष प्राप्त करने के लिए, to become stable. Now, chemical bond is a force which holds the atoms together. Consider A and B are combining. There is a straight line between A and B, which is representing the bond, the force which is tying them together in a row, with a row, in a specific place. So chemical bond is further of 3 types. 3 तरह से atom join करें. Chemical bonding. Number 1 is covalent bond. Number 2 is ionic bond. And number 3 is coordinate bond. When 2 atoms have same size, almost same electronegativity, जब दोनों atoms एक जैसे हों, कोई किसी से powerful नहीं है, then they share their electrons with each other. 50-50% sharing of electrons leads to formation of covalent bond. For example, first hydrogen with 1 electron, atomic number 1, configuration 1s1. Another hydrogen with 1 electron represented by cross, come close to other hydrogen और ये कर लेते हैं जी आपस में समझौता, 50-50% की sharing. Now this is the formation of covalent bond. ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करेगा 1s2 की तरह, ये भी यूज करेगा like 1s2.
So sometimes atoms do 50% partnership by sharing, and that bonding is called covalent. Another bonding is ionic bonding. When one atom have excess of electrons, more than noble gas configuration, they prefer to lose extra electrons and become positive because neon रह जाएगा noble gas. The other atom which require electrons, chlorine 17, neon 3s2, 3p5. It is clear by gaining one electron, configuration will become 3p6, Cl negative. सो एक ने जी इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको चाहिए नहीं था, क्लोरीन को जरूरत थी, क्लोरीन ने आके मांग लिया, क्लोरीन बिकम नेगेटिव. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन, तब क्या बनेगा जी? आयनिक. आयनिक बॉन्ड में आयन्स होंगे. पॉजिटिव को आप बोलोगे केटाइन, नेगेटिव होगा एनाइन. Cations are formed by loss of electron, anions are formed by gain of electron. The third type of bond is coordinate bond. It involves donation of lone pair. एक तरफ मॉलिक्यूल होगा, एक अमोनिया विद लोन पेयर, दूसरी तरफ एटम होगा, हाइड्रोजन थी, कॉन्फ़िगरेशन थी 1s1. H पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, 1s is totally empty, it is vacant. Now ammonia has one extra lone pair. ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा H को. तो यहाँ पे ट्रांसफर था एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे आगे जी डोनेशन. अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दे दिया H पॉजिटिव. This type of bonding is called coordinate bond, and it is always represented by an arrow. Arrow जाएगा जी from donor atom जिसने डोनेशन की to acceptor atom जिसने accept किया. Right? Three type of bonds are there: covalent bond, ionic bond, and coordinate. Covalent bond is formed by sharing. Ionic bond is formed by transfer of electron. Positive and negative ions are formed. Coordinate bond is formed by donation of lone pair by a donor molecule, compound, or a group of atoms. I hope आपको समझ आ रहा होगा. Now, out of these three, ionic compounds जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा, they will conduct electricity. उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी because of presence of positive and negative ions. now क्वेश्चन आ जाता है जी, solid NaCl do not conduct electricity, but molten जब इसको मेल्ट कर दिया, it is a good conductor of electricity. आप इस शॉर्ट आंसर का रीजन दोगे, in solid NaCl, Na positive, Cl negative are bound together with a strong bonding. They are not free to move, no motion. But in molten form, bonds are already broken. Melt करने का मतलब क्या होता है? Providing heat energy to break the bonds. Ions become free. They can easily move. आप rods लगाओगे, पॉजिटिव किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ. Due to motion of free electrons, there will be conduction of electricity. Next है जी नेक्स्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन करवा देती हूँ बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. अब ये क्लियर हो गया कि एटम्स कंबाइन करेंगे टू बिकम स्टेबल, कभी शेयरिंग करके, कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, कभी डोनेशन और एक्सेप्ट करके. लेकिन ये कॉम्बिनेशन इतना सिंपल नहीं होता, एक प्रोसेस होती है हाइब्रिडाइजेशन. इट इज प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी. अलग अलग शेप, अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन कर जाते हैं जी टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स
जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और जिनकी शेप भी सेम होगी जी। सो एटम्स देखो कितनी अच्छी बात है, एटम्स समझदार हैं, वो पहले अपनी ऑर्बिटल्स को एडजस्ट करते हैं, एनर्जी सेम करके, शेप को सही करके, फिर एक न्यू सेट फॉर्म करके, फिर दे इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। ओवरलैप करना मीन्स बॉन्ड फॉर्म करना। अब आप खुद देखो, एस की शेप है स्फेरिकल, पी की शेप है जी डम्बल, पी जेड, पी वाई, आप कैसे भी ले सकते हो, पी एक्स। अब अगर अगर एस और पी एक्स ने बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसा कॉम्बिनेशन होगा, अजीब सा, नॉट पॉसिबल। एस और पी जेड का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, जब सीधा सीधा मैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। लेकिन डिफरेंट शेप और डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से sometimes it becomes difficult to combine different orbitals. So पहले orbitals मिक्स होके, इंटरमिक्सिंग के बाद न्यू सेट बना के बॉन्डिंग करेंगे। नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जितने ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन करेंगे, मिक्स होंगे न्यू सेट में, उतने ही ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक एस और एक पी जुड़ेगा तो दो न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और शेप होगी लीनियर। बॉन्ड एंगल आएगा जी 180 डिग्री। लेट अस चेक। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ बेरिलियम F2 डाइफ्लोराइड, वर्डिंग ऐसे लिखेंगे जैसे जैसे हम इसे ड्रॉ करें। हम लिखेंगे बेरिलियम इज सेंट्रल एटम with atomic number 4, configuration 1s2 2s2, or we can say configuration is helium 2s2. In ground state, there are 2 electrons in its valence shell. 2p is still available, but it is vacant. Second shell में दो सब शेल अवेलेबल होंगे, 2s and 2p. 2s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p खाली पड़ा है. In excited state, when we provide energy, one electron jumps from s to p. s में रह गया जी एक इलेक्ट्रॉन, p में जंप करके चला गया एक इलेक्ट्रॉन. नाउ 1s and 1p, एक s का और एक p का, पहले ये मिक्स होंगे. डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग देयर मर्जिंग टुगेदर. sp hybridization, these undergo sp hybridization and form a new set of orbitals which make two bonds with covalent bonds with two fluorine atoms. बेरिलियम ने अपने ऑर्बिटल्स को एडजस्ट किया, मिक्स किया, सेम शेप सेम एनर्जी बनाई और फिर बॉन्डिंग कर ली विद फॉलोइंग, सच दैट bond angle is 180 degree and geometry is linear. अगर आप इसे और क्लियर देखना चाहते हो, बेरिलियम के ऑर्बिटल ऐसे हो, छोटी लोब is representing s character and this बड़ी लोब is representing p character. ये बेरिलियम के न्यू ऑर्बिटल्स, पहले s, अगर हाइब्रिडाइजेशन होती तो एक ऐसा होना था, एक ऐसा. अब ये हो गया जी मिक्स और s इसके अंदर चला गया. ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2. तो इधर आ जाएगा f अपना p ऑर्बिटल लेके, बहुत अच्छी बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे होगा फ्लोरीन, ये रही जी बॉन्ड. सो बेरिलियम का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, as shown this 180 degree angle, linear geometry. Any doubt? Any problem? No, ma'am, it's clear. We are taking one more example. Next type of hybridization is Yes, ma'am. sp2. 1s and 2p will two intermix with each other
they will undergo sp2 hybridization. Geometry will be ट्रायंगुलर, 3 का एंगल बनेगा जी, 3 चीजें कंबाइन हो गया, 3 ऑर्बिटल्स ट्रायंगुलर, और टोटल एंगल होता है 360, 3 हिस्से हो जाएंगे इसके, ईच एंगल विल बी 120 डिग्री. Now we are taking an example of BCl3. This is the most important topic of this chapter, BCl3. Again, boron जो केला है जी वो है central atom. Boron atomic number 5. Configuration is helium-2s2 2p1. It has 3 valence electrons. BSEPR करेंगे वो यहीं पे बोल देते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है जी, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, बस होगी ज्योमेट्री. नो, हाइब्रिडाइजेशन ने क्लियर किया कि इतना सिंपल नहीं होता बॉन्ड फॉर्म करना. एटम्स के ऑर्बिटल्स पहले इंटरमिक्स करेंगे फिर बॉन्डिंग. इन ग्राउंड स्टेट there are 2 electrons in 2s and 1 electron in 2p. In excited state, 1 electron jumps from 2s to 2p. Now, ये मिक्स होंगे, intermixing, which is called hybridization. sp2 hybridization. Boron undergoes sp2 hybridization such that geometry is triangular. 3 covalent bonds are formed with 3 chlorine atoms. और इसको ना ऐसे डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करोगे. This is the weak van der Waal interaction between chlorine atoms. Bond angle is 120 degree. Geometry नेम लिखना जरूरी है, बॉन्ड एंगल मेंशन करना भी जरूरी है. वर्डिंग चलेगी बोरोन सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन दिस. फिर बताओगे इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम s to p. देन आप बताओगे इट अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. Make 3 bonds, 1, 2, 3, with 3 chlorine atoms. Geometry का name, geometry का angle. Next is CH4. CH4 में जी कार्बन होगा सेंट्रल. कार्बन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. Atomic number 6. Configuration is 1s2, 2s2, 2p2. In ground state, there are 2 electrons in 2s and 2 electrons in 2. In excited state, 1 electron jumps from 2s to 2p. लो जी, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया. जितने ये एटम लगेंगे साथ में H4, उतने हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये हेल्प करेगा. H4 बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा. समटाइम्स ऐसा होगा ऑलरेडी उतनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, सो Yes, ma'am. ये लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, फिर हम एक्साइटेशन नहीं करेंगे. Okay. Now there will be intermixing of 1s and 3p. So hybridization is sp3. एक H यहाँ पे आएगा, 2, 3, 4. मिक्सिंग के बाद न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल प्रिपेयर होगा. 4 bonds will be formed with 4 H atoms. Geometry will be tetrahedral. सेंटर वाला बॉन्ड अगर आप सीधा बना लोगे तो गलत हो जाएगा. इट इज बिहाइंड द बोर्ड. इट इज अ 3D geometry. This bond angle is 1095 degree and this geometry has a name tetrahedral. 4 हेड है जी इसके, 4 हाइड्रोजन से याद रखना, tetrahedral geometry. Now next one is PCl5. Phosphorus pentachloride. Phosphorus, atomic number 15. Configuration is neon 3s2 3p3. ये configuration आनी चाहिए. atomic number याद करो पहले.
फिर आप कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करो, फिर होगी हाइब्रिडाइजेशन. इट इज कंपल्सरी टू शो ग्राउंड स्टेट, इनिशियल स्टेट. शॉर्टकट नहीं चलेगा. 3p3. 3 में d भी होता है जी, एम्प्टी. इट्स ऑलरेडी अवेलेबल. थर्ड शेल के सभी अवेलेबल होंगे. Yes, In ma'am. excited state, there are 5 colorants. It is clear कि हमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए. 3 तो अवेलेबल है, 1 2 3. ये एक जंप करेगा इन एक्साइटेड स्टेट. अप एरो, डाउन एरो. सिंगल है तो फुल है. 3p1 2 3 and 1 electron excites from s to d orbital such that it undergoes sp3 dehybridization. 5 की ज्योमेट्री होगी जी ट्राइंगुलर से बन गया ट्राइगोनल. 3 लगा दिए ट्रायंगल की फॉर्म में और नेम आ गया ट्राइगोनल. 2 लगा दिए पिरामिड्स. 2 मतलब बाय पिरामिडल. ये है जी पिरामिड. सी है एट 90 डिग्री. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. एग्जैक्ट. This angle is 90 degree and obviously this angle will be 120. So geometry होगी जी trigonal bipyramidal. Total 5 bonds are formed with 5 chlorine atoms after the hybridization. 3 चीजें जरूरी. Hybridization बताओ, geometry का नाम बताओ, trigonal bipyramidal, bond angle दोनों मेंशन हिंदी जाएगा. Excited state जरूर शो. एंड डॉटेड लाइन को अगर डार्क बना दोगे फिर ये करें. Okay, ma'am. ठीक है जी. Those dotted lines are just representing weak van der Waals interaction between the different atoms which are joining together. Next is SF6. वो आप खुद try करोगे. And now I am moving towards lone pair geometries. Hybridization में lone pair वाले draw करें. First is ammonia, NH3. Nitrogen is central atom. Atomic number 7. Helium 2s2 2p3. In ground state, 2 electrons are present in 2s and 3 electrons are present in 2. Now, n के साथ देखो 3 hydrogen atoms हैं and there are already 3 unpaired electrons in 2p. 1, 2, 3. No need of excitation, but we will definitely represent excited state. Show करनी पड़ेगी excited state क्योंकि आप एनर्जी तो प्रोवाइड करोगे बॉन्डिंग फॉर्मेशन की. एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेके sp की तरफ चला जाएगा. बोथ हो जाएंगे मिक्स. Hybridization is sp3. 3 bonds are formed with 3 H atoms, but there is one lone pair, something extra. Total things are 4. 1 lone pair, 3 bond pair. 4 वाले की ज्योमेट्री होगी जी होनी चाहिए थी. ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, but due to presence of one lone pair, geometry get distorted. Geometry खराब हो गया. Geometry get distorted and it became pyramid. It will look like Egyptian pyramid. N H Okay, ma'am. H H and no. और जब आप वंडरवॉल इंटरेक्शन दिखाओगे ना, अगर लोन पेयर छोड़ दो, it will look like a pyramid. So geometry name is pyramidal. Bond angle हो गया जी इसका 107.2 डिग्री. राइट. Yes, ma'am. तो जब बॉन्डिंग वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे तो लोन पेयर्स ज्योमेट्री को कर देंगे डिस्टॉर्ट. ज्योमेट्री टेट्रा से चेंज होगी और Okay, ma'am. let us take one more example. That is water. H2O. Oxygen central atom, atomic number 8. Helium
2s2, 2p4. In ground state, 2 electrons in 2s, 4 electrons in 2p. 2 bonds बनाने हैं 2h atoms में, 2 hydrogens में से एक oxygen में, and already 2 electrons are there. So in excited state there will be no change. 2s excite होगा, energy लेगा, but electron jump नहीं करेगा. These will just intermix with each other. S और P के तीनों डब्बे sp3 hybridization. But there are 2 lone pairs and 2 bond pairs, 2 H atoms. Geometry होगी जी. Lone pairs, geometries, bent shape, and it is also called V-shaped geometry with bond angle 104.5 degree. Due to presence of 2 lone pairs, geometry get distorted. Symmetry खराब होगी बच्चे because lone pair आ. And there is one more example of presence of lone pair and distortion in geometry. That is SF4. Sulfur central atom, atomic number 16, configuration is neon 3s2 3p4. Sulfur has 2 electrons in 3s and 4 electrons, same as oxygen. Oxygen family का member. 3p4. 3d orbitals are available, but there is no need of excitation because 4 bonds बनेंगे. लेकिन एक हमें जंप करवाना पड़ेगा. In excited state, only 1 electron will jump. Yeah. To make the arrangement for bonding by providing energy. हमारा एनर्जी का अमाउंट उतना ही होगा कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होती जाए. तो ये 3p से निकल के चला गया 3d में. Now it is sp3d hybridization. There are 4 covalent bonds formed after hybridization with 4 fluorine atoms. 1 lone pair, total चीजें होगी 5. एक lone pair, 4 bond pair, total हो गए 5. 5 की ज्योमेट्री होनी चाहिए जी पेंटागोनल बाइपिरामिड. सॉरी, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड. ट्रायंगल के साथ 2 पिरामिड्स लाइक दिस. बट देयर इज वन लोन पेयर. ये दोनों पोजीशन एक जैसी है, ये दोनों पोजीशन एक जैसी है. ये बची थी लोन पेयर की पोजीशन. SF4. I'm just erasing extra formulas. Fluorine and fluorine. Now joining. And this geometry is called seesaw geometry. It should be trigonal bipyramidal, but due to presence of lone pair, ये line लिखनी जरूरी है. The geometry get distorted and become seesaw. This angle is 90 degree, but this angle is also 120 degree. This angle will change. ये angle change हो जाएगा. Plane के साथ इसका angle same रहेगा 90. Right? Okay, ma'am. There are more examples on your book. You can take those examples and you can do practice by yourself. And now I'm going to explain about sigma and pi bond.
Not so important, but इसका short answer आ जाता है to calculate sigma and pi bonds. Yes, ma'am. Now bonding is of two types. Sigma bond and pi bonds are the two bonds. Sigma bond is formed when orbitals do head-on overlapping. P with P, S with S, spherical shape, sigma bonding, S with P, SS, SP, and P. But P orbitals, which are present on vertical axis, not horizontally, like PY or PZ, they overlap sidewise. Yes, ma'am. And sidewise overlapping leads to formation of weaker bonds, which are called pi bonds. Same as in case of PZ, it will be like this. This bonding is pi bond. And pi bonding is called lateral bond, lengthwise. Sigma bonding is called axial bond. Axis to axis match करती हैं orbitals आपस में. And sigma bond is the stronger bond because of proper overlap. Pi bond is weaker than sigma. Pi bond can exist independently. ये अकेला भी मिलेगा आपको single bond. Pi bond does not exist independently. पहले sigma bond आएगा, उसके बाद क्या form होगा? Pi bond. Any doubt? No, ma'am, it's clear. Right. Equilateral bond है दोबारा दस तो. Lateral bonding means lengthwise bonding, length to length, दूर दूर से bonding, Okay, ma'am. not head to head. Now question कैसे आएगा बेटा? Calculate the number of sigma and pi bonds in the given molecule. आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल हमेशा सिग्मा होगा. अगर डबल है, किसी में भी हो सकता है, नॉट ओनली कार्बन, तो एक सिग्मा एक पाई. अगर ट्रिपल है जी, पहले सिग्मा फॉर्म होगा, बाकी दो क्या होंगे? पाई. और लुक कैसे चेक कर ले. पहली सी का पी ऑर्बिटल आया, दूसरी सी का पी ऑर्बिटल, जो एक्सिस के अलॉन्ग था उसने कर ली हेड ऑन ओवरलैपिंग और बन गया सिग्मा. अब सिग्मा ने इसको बांध लिया कार्बोनेट का. अब ये कार्बन यहाँ से मूव नहीं कर पाए. अब इसके कार्बन के टोपी में 3 ऑर्बिटल थे, 3 लोब्स थे. ये रही थी पी वाई. अब ये नजदीक नहीं आ सकती ड्यू टू दिस बॉन्डिंग. अब जो दूर दूर से लेटरल बॉन्डिंग करेंगे लेंथ, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया पाई. अब इसका पी एक्स पी वाई पी जेड भी था, ये रहा जी पी जेड. ये आपस में करेंगे बॉन्डिंग एंड दे विल अगेन फॉर्म अ पाई. सो सिग्मा फॉर्म होने की वजह से ये दूर दूर हो गए एंड ये दूर दूर से बॉन्डिंग करेंगे विच इज कॉल्ड पाई. सो एक सिग्मा होगा, बाकी दो पाई होंगे. अगर आप इसको देखना चाहो तो ये आपको ऐसे मिलेगा. ऊपर वाली लोब्स सारी ये वाली आपस में जुड़ जाएंगी और नीचे वाली लोब्स आपस में जुड़ जाएंगी. इसको पूरा आसपास से ऐसे कवर. इट विल बी cylindrical form. There will be an electron cloud in a cylindrical form. Above that below. Proper density. Okay, ma'am. This is sigma bonding and the two are pi bonds. Right? For example, calculate the number of sigma bonds and pi bonds in this molecule. How many sigma bonds are there? How many pi bonds are there?
All the single bonds are sigma bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दो में से एक होगा सिग्मा बॉन्ड. 7, 8, 9, 10, 11. एंड इस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा था जी, एक ही रह गया. Pi's only. Any cyclic compound? How many sigma bonds? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. How many pi bonds? 1. 2. Extra वाले जितने भी होंगे pi bonds. There is one more example. Triple bonding. 2 lines around the center. And there is one. Now, calculate number of sigma and pi bonds. Sigma 2, 6. नहीं. 5, 6 sigma. Yes, ma'am. And 3 pi bonds, right? pi bonds. जो भी Yes, एक्स्ट्रा ma'am. दिखेगा मींस स्केलेटन के ऊपर ऊपर पड़ेंगे वो pi bonds. Yes, ma'am. Right? In case of benzene, which is C6H6, one alternate bond. How many sigma bonds are? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many pi bonds? 1, 2, 3. 3. We can easily calculate. No problem. Yes, ma'am. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी जब ऐसे दिया हो. समटाइम्स बच्चे इसको ओपन नहीं करते, बस जो जो बॉन्ड्स दिखाई दे रही है उसको कैलकुलेट करते. लेकिन व्हाट अबाउट CH3, H2, H एंड H2? हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड के साथ ही कंबाइन होगी ना, साथ में जुड़ी हुई. तो आपको पहले से ऐसे ओपन करना है. CH3, C, H, H, H2. सेल्टन ओपन करोगे, फिर काउंट होगे जी मार्क्स. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11. सिग्मा बॉन्ड्स हो गई. 5 बॉन्ड है. Any doubt? No, ma'am, it's clear. Good. Satisfied? Yes, ma'am. So today we have done 3 types of bonding. Yes, ma'am. आप उसको पढ़ लेना, थ्योरी को अच्छे से, बैक क्वेश्चंस कर लेना. Then the main topic hybridization. बाकी बचे हुए एग्जांपल्स ट्राई कीजिए. डाउट है तो Okay, ma'am. एंड द रिलेटेड क्वेश्चंस टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. आप इसमें से एक शॉर्ट आंसर आएगा आपको. आउट Yes, ऑफ ma'am. सिग्मा एंड पाई व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई. एक Yes, आपको ma'am. आएगा गिवन इन 3 डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. और एक डिफरेंस आ जाएंगे, एक इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, और एक आपको हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिगमेंट्स. ठीक है जी, ये आप Yes, कर लियो. ma'am. कल हम करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, VSCPR थ्योरी, Okay, ma'am. और जल्दी हो जाएगा चैप्टर. देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज डायपोल मोमेंट. Yes, ma'am. डायपोल मोमेंट का रीजनिंग क्वेश्चन आएगा आपको पक्का. Okay, ma'am. ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे. कल फिर सिमरन केमिस्ट्री करेंगे, परसों हो जाएगी जी फिजिक्स. Okay, ma'am. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लो, इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी. फिर वी विल कंटिन्यू विद फिजिक्स. Yes, ma'am. ठीक है, ma'am. ओके बेटा, टेक केयर.